Good morning, friends. Myself, Risika Pagaria from Araham College. In last lecture, we were studying about the European Union. In that, we studied the first point, that is the evolution of European Union. In that, we studied the फर्स्ट पॉइंट वी वर completed, that is the establishment के बारे में अपन ने कंप्लीट किया था. उसके बाद we started with the second point, that is the goals of the European community. One of the main goal of the EC was the integration of its member economy into a single frontier line less market that would have a common currency and a common central bank. The EMS, European Monetary System, it was established in 1978 to regulate currency exchange rate and aid monetary stability among its members. The EMS, which took effect in 1979, linked the currencies of the EC member countries, like accepting those that of United Kingdom, Spain, and Portugal, who declined to participate, so as to avoid large day-to-day fluctuation in currency rate while permitting periodic realignment. Then, structure of European Union. First is the European Committee. This super civil service lies at the heart of the Union. It acts as a guardian of the treaty, formally originated all legislative measure, and is responsible for implementation of all decisions regarding the Council of Ministers. Then the European Parliament. The European Parliament. The population of their respective constituency for a fixed 5-year term elected Euro MPs. Their power have been progressively expanded over the last 20 years. Then comes the Council of Ministers. This central and ultimate decision making body in the Union. There are in fact many councils consisting of ministers from member states with specific portfolio such as agriculture, transport and social affairs. No directive can be issued or amended unless it is agreed by the council. And then the European Court of Justice. See, यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट और यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस दोनों अलग अलग है. वन जज, इसके अंदर क्या है, कोर्ट का काम क्या है, is to restore and it turns to make decision based upon the perceived intention of the legislator rather than just the letter of the law. Only one judge is given and no distinct views are published. The court decisions are final and takes immediate effect. Their opinions are published in advance of important cases and the courts frequently rule in the line with their advices. Now, other institute क्या है? The European Central Bank. This principal institute maintaining price stability in the Eurozone. The European Investment Bank. Its purpose is to ensure that weak regions and sectors are given assistance in order to develop more in line with EU norms. Court of Auditor. This body audits the account of the European Union. The European Ombudsman. This is an official establishment by the European Parliament to investigate complaints of the maladministration. The Economic and Social Committee. This is composed of a representative from employees association, trade union and consumer courts. The Committee of a Region. This was established to ensure that locally elected representatives are consulted on EU policies and legislation. And European Union legislation machinery. A wide range of legislation in 39 policy area is now adopted under a process called the co-decision procedure. Then we saw the functions of European Union. Creation of closer relation. The function of European Union is to enable closer relation between the member states. This is in order to make the most of the effective abilities of the member state, for example, free trade, freedom of movement, freedom of job choices. It enables a lot of bureaucracies that used to be involved with those issues to be made to be bypassed. The to pass good laws and to scrutinize and control the use of executive power is the important function of EU.
guardians of the treaties. This function is performed through Court of Justice. It provides the judicial necessary safeguarding necessary to ensure that the law is observed in the interpretation and application of the treaties and generally in all the activities of the union. Maintaining trade relationship. It functions as the manager and executor of union policies and international trade relationship. Financing. European Investment Bank is the European Union financing institute. It provides loans for capital investment, promoting the union's balanced economy, development and integration. Now we'll move towards the SAR. SAR क्या है? हाँ, it is nothing but a South Asian Association for Regional Cooperation. What is SAR? The South Asia Association for Regional Cooperation comprises Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan and Sri Lanka. See, ये जो साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है उसके अंदर क्या क्या आता है? अफगानिस्तान आता है, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका आता है. The basic aim of the association is to accelerate the process of economic and social development in the member state through joint action in the agreed areas of cooperation. See, the basic aim of the association क्या है? एक main aim of association क्या है? Is to accelerate the process of economic and social development. Like अपने को क्या है? सबका progress देखना है in the field of economic and we should look after the social development through joint action. Like सब एक दूसरे के साथ cooperate करने के लिए मानो तो क्या है? You can work properly. तो हर कोई एक दूसरे के साथ coordinate करके अच्छे से काम करेगा. Then SAR is a manifestation of the determination of the people of South Asia to cooperate regional and to work together towards finding solution to their common problems in a spirit of friendship, trust and understanding based on mutual respect, equality and shared benefit. See, SAR क्या है? SAR is a manifestation of the determination of people. ये क्या है? It is the determination of people of South Asia to cooperate regionally. क्या है? जो साउथ एशियन कंट्रीज़ है वो क्या है? एक दूसरे के साथ अच्छे से कॉपरेट करें और अच्छे से एक दूसरे के साथ काम करें और जो भी उनके प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर वो एक जो भी उनके कॉमन प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर सोल्यूशन निकाले. और ये सब किस बेसिस पे चल रहा है? इट इज़ जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ फ्रेंडशिप, ट्रूथ, अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे को म्यूचुअल रिस्पेक्ट देना और हर कोई अपना अपना बेनिफिट वगैरह शेयर करना. अगर किसी ट्रेड से बहुत ज़्यादा आपको प्रॉफिट हुआ है यू आर सपोज टू शेयर दैट एंड ऑल. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द इवोल्यूशन ऑफ SAR. The South Asian Association for Regional Cooperation, right, comprises Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan and Sri Lanka. अभी कौन सी कंट्रीज आती है इसमें? सार में अपन ने फर्स्ट पॉइंट में भी पढ़ा था. इसके अंदर क्या क्या आता है? अपना इंडिया तो है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सारे अपने नेबरिंग कंट्रीज है ना. दे ऑल टुगेदर फॉर्म द SAR. SAR is a manifesto of the determination of the people of South Asia to work together towards finding solution to their common problems in spirit of friendship, truth and understanding and to create an order based on mutual respect, equality and trust and shared benefit. अच्छा, जो ये अपन ने ऊपर पढ़ा था वही उन्होंने रिपीट किया है सेंटेंस यहाँ पे, राइट? वही सेंटेंस रिपीट हुआ है जो ऊपर पढ़ा था अपन ने. The main goal of the association is to accelerate the process of economic and social development in member states through joint action in the agreed areas of cooperation. See,
अभी एक गोल क्या है, एक एसोसिएशन का एक मेन गोल क्या है, इज टू एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट इन द मेंबर स्टेट्स थ्रू joint action in the agreed area of cooperation. The evaluation of SAR is described as follow. Idea of regional cooperation. The idea of regional cooperation in South Asia was first mooted in November 1980. See, the idea of regional cooperation in South Asia, ये फर्स्ट कहाँ पे हुआ था, इसका फर्स्ट कब चालू हुआ था, ये आइडिया सब किधर चालू हुआ था, इट वॉज इन द मंथ ऑफ नवंबर 1980. After consultation, the foreign secretaries of the 7 countries met for the first time in Colombo in April 1981. See, सबके साथ कंसल्ट वगैरह किया, सब कुछ हुआ. फिर फॉरेन सेक्रेटरीज ऑफ 7 countries क्या हुआ, they met for the first time in Colombo in April 1981. Meeting of Committee of Whole. This was formed a few months later by the meeting to the committee. See, this was followed. अभी एक मीटिंग हुआ था of the committee of a whole which identified the 5 board areas of regional corporation. इससे क्या पता चलता है अपने को कि बाबा यहाँ पे 5 बोर्ड एरियाज लाइक 5 एरिया में अपन सब मिलजुल के काम कर सकते हैं. 5 areas in all total. Then moving forward, third point, launching of integrated program of action. See, the foreign minister at their first meeting in New Delhi in August 1983 formally launched the integrated program of action through the adoption of declaration on South Asian Regional Corporation. See, the foreign minister ने क्या किया, उनके मीटिंग में, जो उनकी फर्स्ट मीटिंग थी न्यू दिल्ली में, दैट वाज इन अगस्त 1983. उसके अंदर व्हाट दे केम अप विद द इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ऑफ एक्शन, IPA. ये कैसा हुआ, ये प्रोग्राम इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ऑफ एक्शन कैसे डेवलप हुआ, थ्रू द अडॉप्शन ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ साउथ एशियन रीजनल कॉर्पोरेशन, दैट इज SAR. Then first summit. At the first summit held in Dhaka on 7 and 8 December 1985, the character establishing the South Asian Association for Regional Corporation was adopted. See, at the first summit, which was at ये पहला summit जो ढाका में हुआ था on 7-8 December 1985, the character क्या है, establishing in the South Asian Association for Regional Corporation was adopted. See, institutional structure of SAR. The following are the different point of institutional structure of SAR. Submits. The highest authority of the association rests with the head of the state or government. See, ये जो highest authority है of the association क्या है, it rests with the head of the state or government. During the period of 1985-95, 8 meetings of the head of the state or government had been held in Dhaka. अभी यहाँ पे क्या है, हेड ऑफ द स्टेट और गवर्नमेंट, इनके पास हायर अथॉरिटी थी. अब उसी पीरियड में क्या हुआ, 85-95 में तक क्या हुआ, 8 मीटिंग हुए थे. ये हेड ऑफ द स्टेट्स के क्या हुए थे, 8 मीटिंग हुए थे. लाइक फर्स्ट वॉज हेल्ड इन ढाका इन 1985, फिर बांग्लादेश में हुआ 1986, देन काठमांडू 1987 में हुआ, इस्लामाबाद 1988 में हुआ, देन मले 1990, कोलंबो 1991, फिर से ढाका में हुआ 1993 में, न्यू दिल्ली 1995 एंड मले इन 1997 रिस्पेक्टिवली. यहाँ पे उनके मीटिंग्स वगैरह हुए थे. Then the next point is the Council of Ministers.
नहीं, Council of Minister, comprising the foreign minister of member state. It is responsible for the formulation of policy. See, comprising of foreign minister, जो भी foreign minister है, they are the member state and they are responsible for the formulation of policy, receiving progress, deciding a new areas of cooperation, establishing additional mechanism as deemed necessary, and deciding on other matter of general interest to the association. See, कंप्राइजिंग द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ मेंबर स्टेट, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबल है कि बाबा प्रॉपर पॉलिसीज़ बनाए, जो भी प्रोग्रेस हुआ है उसके बारे में रिव्यू ले, फिर नए नए एरियाज़ क्या आ सकते हैं अपने कॉर्पोरेट जिसके साथ अपन कॉर्पोरेट वगैरह कर सकते हैं वो देखें, और फिर एडिशनल पॉइंट्स क्या ऐड करने वो ऑन डिसाइडिंग, और जनरल मैटर ऑफ इंटरेस्ट, अभी कुछ मैटर है जो हर कंट्री फेस कर रही है कुछ प्रॉब्लम, राइट, तो वो सारे मैटर यहाँ पे डिस्कस कर लिए जाते हैं. द काउंसिल मीट्स ट्वाइस अ ईयर एंड मे ऑल्सो मीट इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेशन बाय एग्रीमेंट ऑफ मेंबर स्टेट. सी, द काउंसिल कब मिलते हैं? द काउंसिल मीट्स ट्वाइस अ ईयर एंड मे ऑल्सो मीट इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेशन बाय agreement of member state. It has held 15 sessions till November 1995. See, नवंबर 1995 तक इनके कितने सेशंस हो गए थे? 15 सेशंस हो गए थे. Then the next point is the standing committee, comprising the foreign secretary of member state. It is entrusted with the overall monitoring and coordination of programs and the modalities of financing, determining internal sectoral priorities, mobilizing regional and external resources, and identifying new areas of cooperation based on appropriate studies. See, अभी फॉरेन सेक्रेटरी रहता है, इज़ द मेंबर स्टेट, उसका काम क्या रहता है? सब कुछ अच्छे से मॉनिटर करने का, सारा प्रोग्राम कोऑर्डिनेट करने का, एंड द मॉडलाइट्स ऑफ फाइनेंसिंग, डिटरमाइनिंग इंटरसेक्टर प्रायोरिटीज़, फिर सारा रीजनल, मोबिलाइजिंग रीजनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज, एंड आइडेंटिफाइंग द न्यू एरियाज ऑफ कोऑपरेशन बेस्ड ऑन अप्रोप्रिएट स्टडीज. It may meet as often as deemed necessary, but in practice it meets twice a year and submit its report to the Council of Minister. See, ऐसा नहीं है कि साल में 2 ही बार मिलना है आपको, ऐसा नहीं है. अगर ज़रूरत पड़ गई, हाँ, कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो आप साल में 2 बार से ज़्यादा मिल सकते हो, और जो भी आपने उस मीटिंग में किया है उसकी रिपोर्ट यू कैन सबमिट इट टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. इट हैज़ हेल्ड 20 regular sessions and 2 special sessions till November 1995. See, it has held 20 regular sessions हुए हैं और 2 special हुए हैं, 2 special sessions हुए हैं till November 1995. Then program committee comprising the senior officials. It meets prior to the standing committee session to scrutinize secretarial budget, finalizing the calendar of activities, and take up any other matter assigned to it by standing committee. See, comprising the senior office क्या है? दी मेट प्रायर टू, एक बार पहले स्टैंडिंग कमेटी सेशन से पहले मिलते हैं ताकि वो अपना बजट पूरा स्क्रूटिनाइज कर सके, आगे कैसे क्या अपन काम कर सकते, दे कैन फाइनलाइज द प्लान, एक्टिविटी क्या करनी है क्या नहीं वो सब डिसाइड कर सके, एंड टेक अप अदर मैटर असाइन टू इट बाय द स्टैंडिंग कमेटी, और बाकी जो भी मैटर है उस पर भी वो लोग अच्छे से काम कर सके. दिस कमिटी, अरे बाप रे कहाँ पे थे बाबा अपन, हाँ, दिस कमिटी हैज हेल्ड 15 सेशन टिल 1995. नहीं, द चेयरमैन of each technical committee normally rotates among members country in alphabetical order every 2 years. See, the chairman of each technical committee, see, जो chairman है और टेक्निकल कमेटी वो क्या है, नॉर्मली रोटेट होता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में हर 2 साल में. एट प्रेजेंट देयर आर 12 टेक्निकल कमिटीज़. एट प्रेजेंट क्या है,
there are 12 technical committees. However, with the merge of technical committees on environment and meteorology beginning from 1st January 1996, the member of technical committees will be 11. See, अभी क्या है, with the merger of the technical committees, अभी टेक्निकल कमिटी मर्ज होगी एनवायरमेंट एंड मेट्रोलॉजी के. ये कब हुआ? 1 जनवरी 1996 को हुआ. द नंबर ऑफ टेक्निकल कमिटी विल बी 11. Then action committee. According to SAR character, there is a provision for action committee comprising member state concerned with member state. At present there is no such action committee. See, पहले क्या था, एक एक्शन कमेटी थी जो क्या है मेंबर स्टेट से कंसर्न वगैरह करती थी, मेंबर से वगैरह बात करती थी. बट एट प्रेजेंट क्या है, ऐसी कोई भी एक्शन कमेटी नहीं है. अब एक्शन कमेटी नाम की कुछ भी नहीं है यहाँ पे. Now moving towards the 7th point, that is the other members. During the first decade of SAR, several other important meetings took place in special context. See, during the first decade of SARS क्या है, बहुत से important meeting हुए थे. A number of SAR ministerial meetings have been held to focus attention on specific areas of common concern and has become an integral part of the consultative structure. See, यहाँ पे क्या हुआ, बहुत से सार के मिनिस्टर्स क्या हुआ, मीटिंग वगैरह करते थे और वो कुछ स्पेशल एरियाज पे भी फोकस करते थे जिनसे सबका कॉमन इंटरेस्ट सर्व हो. हाँ, और ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंसल्टेशन बन गया है. सो फार फाइनेंशियल लेवल मीटिंग हैव बीन हेल्ड ऑन द इंटरनेशनल इकोनॉमिक इश्यूज. सी, अब तक क्या है, मिनिस्ट्रियल क्या है, लेवल मीटिंग हैज़ बीन हेल्ड ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक इशू. मिनिस्टर्स के मीटिंग कौन सी बात पे हुए हैं, ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक इश्यूज जो है उस पे लेके मिनिस्टर्स के मीटिंग हुए हैं. फर्स्ट इज द इस्लामाबाद 1986 children, then New Delhi 1986 and Colombo 1992 women in development, then Shillong 1986 and Islamabad 1990 environment, New Delhi 1992 women and family health, then Kathmandu 1993 disabled person, Islamabad 1993 youth male, 1994 poverty, Dhaka 1994 Women towards the 4th World Conference on Women in Belgium, Dhaka 1995. So far, 6 meetings of planners had been held, 1 in 1983 and 5 annually from 1987 to 1991. See, so far क्या है, 6 meetings of planners, 6 मीटिंग हुए प्लानर्स के. फर्स्ट मीटिंग कब हुआ, इन 1983 एंड 5 एनुअल और उसके बाद 5 साल में 5 हुए, राइट, दैट इज फ्रॉम 1987 टू 1991. This meeting initiated cooperation in important areas such as trade, manufacture and service, basic needs, human resources development, data based on socio-economic indicator, energy molding techniques, plant molding techniques and poverty alleviation strategy. See, अब क्या हुआ यहाँ पे, इस मीटिंग में क्या होता था, अपन ये मीटिंग की बात कर रहे हैं. दिस मीटिंग इनिशिएटेड कॉपरेशन. यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट एरियाज़ है उनमें वो सब इम्पोर्टेंट एरियाज़ में अपने को एक दूसरे के साथ कॉपरेट करना है. कौन से इम्पोर्टेंट एरियाज़ हैं, ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, फिर देन बेसिक नीड्स दैट इज़ द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, डेटा बेस ऑन सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर, एनर्जी मॉडलिंग टेक्निक्स, प्लांट मॉडलिंग टेक्निक्स एंड पॉवर्टी एलिवेशन स्ट्रैटेजीज. In addition, a high-level committee on economic cooperation has been established in 1991. उसके अलावा क्या है यहाँ पे, high-level committee on economic cooperation has been established in 1991 for identifying and implementing programs in the core area of economic and trade cooperation. See, for एक कमिटी बनाई थी, हाई लेवल कमिटी बनाई थी फॉर प्रॉपर इकोनॉमिक कॉपरेशन, उसको ECE बोला है. इट हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड इन 1991 फॉर आइडेंटिफाइंग एंड इम्प्लीमेंटिंग प्रोग्राम इन कोर एरिया ऑफ इकोनॉमिक एंड ट्रेड कॉरपोरेशन. 3-tier mechanism was put in place in 1995. See,
यहाँ पे 3-tier mechanism it was put in place in 1995 to follow up on the relevant SAR decision on poverty eradication. फिर इसके ऊपर काम कर रहे थे, दैट वॉज सार का डिसीजन तो ये था ऑन पॉवर्टी इरेडिकेशन, पॉवर्टी से निकालनी है, पॉवर्टी कम करनी है अपने को. द टायर्स कंसिस्ट ऑफ मीटिंग ऑफ सार डिसीजन ऑन पॉवर्टी इरेडिकेशन. सी ये टायर क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ मीटिंग ऑफ सार डिसीजन ऑन पॉवर्टी इरेडिकेशन. द टायर्स कंसिस्ट ऑफ मीटिंग ऑफ सेक्रेटरी. अब उस मीटिंग में कौन कौन था, सेक्रेटरी इन चार्ज ऑफ पॉवर्टी इरेडिकेशन, मीटिंग ऑफ फाइनेंस प्लानिंग सेक्रेटरी एंड मीटिंग ऑफ फाइनेंस प्लानिंग मिनिस्टर. सी यहाँ पे क्या थे, सेक्रेटरी इन चार्ज ऑफ पॉवर्टी इरेडिकेशन था, मीटिंग ऑफ फाइनेंस एंड प्लानिंग सेक्रेटरी था एंड मीटिंग ऑफ फाइनेंस प्लानिंग मिनिस्टर्स थे उसमें. We'll wind up the lecture here today. In next lecture, we'll start with the objectives of the SARS. Meanwhile, you can read the topic well. If you have any doubt, you can mail me on my mail ID. My mail ID is rasika.pagaria@arahamedu.in. Thank you.